अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद सालों में आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि पाकिस्तान के बेशतर लोकल फ़ैशन रिटेल ब्रांड्स ने अपने परफ्यूम्स की लाइन शुरू कर ली हैं। आप चाहे खाड़ी जाएं, चाहे सैफायर जाएं, चाहे बीच ट्री जाएं या और भी कई दुकानों पे जाएं, वहाँ पे आपको काउंटर पे परफ्यूम की बोतलें मिलेंगी जो कि लोकली बनाई जाती हैं, लोकली पैकेज की जाती हैं और एज अ लोकल प्रोडक्ट ब्रांड भी की जाती हैं। अब इस हफ्ते प्रॉफिट की सेक्टर एनालिस्ट निस्मा रियाज ने इस टॉपिक पे रोशनी डाली है। निस्मा, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें बताती है कि कैसे लोकल ब्रांड्स एक नए बिज़नेस में एंटर किए हैं, और उसके अंदर सबसे दिलचस्प बात यह है आप शुरू करती हैं कि इसकी बिगिनिंग जुनेद जमशेद, जो कि पहले सिंगर थे और फिर बाद में उन्होंने अपना एक फ़ैशन ब्रांड भी खोल लिया, उनसे शुरू होती है। तो प्लीज़ टेक अस थ्रू ये बिगिनिंग क्या थी इस ट्रेंड की। अच्छा, तो बेसिकली पाकिस्तान में पहले ऐसे होता था कि लोकल परफ्यूम्स इतने अर्बन सिटीज में पाए नहीं जाते थे। और ज्यादातर लोग जैसे देयर वर शॉप्स लाइक सेंसेशंस या बॉडी शॉप, उस तरह की दुकानों पे जाके लोग इम्पोर्टेड परफ्यूम्स लेते थे यूजुअली। या तो जो दूसरे वाले थे, सिंस दे डिडंट हैव लाइक एनी लोकल ऑल्टरनेटिव्स, वो बॉडी स्प्रे यूज करते थे या टैल्कम पाउडर यूज करते थे। एंड वी रिमेम्बर शी और फा यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर बैक देन व्हेन पीपल कुडंट अफोर्ड, लाइक जो लोग इम्पोर्टेड परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो ये यूज करते थे। और फैशन रिटेलर्स के अपने कोई परफ्यूम्स नहीं होते थे, इवन दो ग्लोबली दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप कोई भी ब्रांड उठा लें, लग्जरी या लाइक सेमी लग्जरी, जैसे टॉम फोर्ड, मार्क जेकब्स, डियोर, शनेल, ऑल दीज हैव देयर ओन फ्रेग्रेंस लाइंस। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। तो जुनेद जमशेद स्टार्टेड दिस इन 2005। और उनका जो थोड़ी रिलीजियस सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग होती है, और लाइक जुनेद जमशेद एज अ ब्रांड इमेज यूज्ड टू बी, तो उन्होंने अत्तर निकाला था विच इज लाइक नॉन अल्कोहलिक, या उसका जो अल्कोहल कंटेंट होता है वो इट्स मेड विद अ सर्टेन काइंड ऑफ अल्कोहल दैट कम्स फ्रॉम शुगर केन विच इज कंसिडर्ड टू बी हलाल। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था एंड नो वन एल्स वाज डूइंग दिस। फिर eventually, like I think it was around 2009 that this segment really started taking off and it got a lot of attention and people started actually buying their perfumes. और फिर उन्होंने थोड़ा इतर से हट के अपने प्रॉपर लाइक परफ्यूम लाइन स्टार्ट की with they had a range of different fragrances. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लगा कि शुरू में सिर्फ फैशन रिटेलर्स में स्पेसिफिकली जुनेद जमशेद, जे डॉट जो था, दे वर मेकिंग दीज परफ्यूम्स, एंड अदर देन देम मार्केट में तो बाकी ब्रांड्स कब इस फील्ड में, इस सेगमेंट में एंटर किया है? I think Bonanza was the one who came in after J Dot, which is around 2017. uh, like it's been a while, Bonanza go in the market. Lekin a lot of brands for like almost a decade, they didn't realize that this is, like a potential market that they could tap into. And J Dot essentially had no competitors. Abhi in recent years, like the last 6 years, other fashion retailers have started entering the market. तो उसमें एथनिक इज द न्यूएस्ट आई थिंक, जिन्होंने लेट 2020 में स्टार्ट किया है। लेकिन उससे पहले खादी स्टार्टेड विद देयर बॉडी मिस्ट, Sana Safinaz, Maria B, all these other like big fashion houses have perfumes of their own now. ओके, एंड आई थिंक वन अदर थिंग आई एम थिंकिंग एट दिस पॉइंट इज़ के परफ्यूम्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक यू हैव सॉर्ट ऑफ एक प्रीमियम किस्म के होते हैं, कुछ होते हैं दैट आर फॉर एवरीडे यूज़। तो मोस्टली किस सेगमेंट को पाकिस्तान के फैशन रिटेलर्स ने टारगेट किया है? किस किस्म के कंज्यूमर हैबिट्स किस तरह की इससे में नज़र आ रही हैं? इनके लोग इन पे पैसे खर्च रहे हैं? आर दीज सक्सेसफुल वेंचर्स बाय दीज ब्रांड्स? Uh, so they have different ranges. Most brands are targeting, like low price. They're playing on a price point. If you consider J Dot alag se, they have like a big range of almost 100 different scents. So usme, it can range from, very cheap, 1200 rupees. And then one of their perfume, like the most expensive one, is 18,000 rupees. लेकिन जो बाकी सारे दूसरे हैं, they hardly ever go over 5,000 rupees. तो वो एवरीडे यूज या उस तरह वाले लोगों को टारगेट करें। And market research also shows that people who are actually using local perfumes, they're using it for daily use because वो सस्ता होता है and it's more volatile also, so you have to keep reapplying it and they don't really use their expensive imported perfumes.
every day, because obviously with the dollar rate and everything, they save those for special occasions, and local perfumes are something that people use every day. ओके एंड आई एम श्योर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस स्टोरी आपने थोड़ा सा देखा होगा परफ्यूम्स बनते कैसे हैं, इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, तो उस रिगार्ड से एज एन एक्सरसाइज इन ब्रांडिंग हाउ वेल हैव पाकिस्तानी ब्रांड्स डन to sort of promote their perfumes and make them also seem high end or make them seem like good products compared to their sort of imported competitors? Yeah, so branding depends from like retailer to retailer, brand to brand. They don't all have, you know, like a similar model of marketing or branding. Yeah, कि when you're checking out counter पे आपको सबके तकरीबन नजर आएंगे, but that's because, you know, it's like a flitting category. आपको नजर आता है, आप उठा लेते हैं just, you know, to try it, and then you end up buying it during checkout. But when it comes to packaging, certain brands are more focused on making it look prettier, or, you know, like giving it an impression that it's expensive, while others don't really care. So jinki body mists वगैरह होती हैं, they're usually in, like, you know, those transparent, like halki wali plastic bottles. So J Dot, I think Beach Tree, these guys focus a lot on their bottles as well. And this is a great thing because a lot of people, you know, who initially found out about local perfumes, they did it because it was gifted to them. And they were like, oh, it's actually not that bad. And then they went back to buy more. So when you're giving someone a present, you don't like give a visibly cheap looking present. So some of them do give it the impression that it's high end because of their packaging. Just as J Dot was, they mentioned how they spend a lot of money on packaging, especially because they have like different ranges, or like if they're spending so much time on their formula and on their like overall product, they don't want the bottle to look cheap. And they have like, you know, a racket and a board and like these quirky type of bottles, but others don't really have, you know, that sort of packaging कि Same. वो international standards match करे. And I think we J Dot ने especially with you know brand associations with Wasim Akram, with squash players, with other celebrities किया है. मगर मुझे जो एक और चीज़ था कि आपने आई एम श्योर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ लोगों से इसके बारे में बात की होगी, तो आपको कोई नंबर्स पता चले हों, कोई फिगर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट फ्रेग्रेंस सेल्स लुक लाइक इन पाकिस्तान, मार्केट कितनी बड़ी है, कुड यू शेड सम लाइट ऑन दैट? Yeah, I have the figures open right here. Uh, so in terms of like sales of fragrances by different categories, there's two types, right? So there's premium fragrances and there's mass fragrances. जो retail value है 2021 में calculate हुई थी in premium fragrances, that was 172 million rupees, as opposed to 1037 million rupees for mass fragrances. So mass fragrances are, you know, the local ones, the label-less ones, yeah, jo premium are obviously like imported and branded ones. So if you compare these, इसमें mass fragrances की बहुत ज़्यादा बेहतर performance है compared to premium fragrances for obvious reasons, because lots and lots of people cannot afford to buy a perfume that ranges from 30 to 60,000 rupees. But the market is fairly big. If you consider, yeah, so the sales of fragrances from 2007 to, if the prediction goes till 2026, उसमें ये है कि it started with, you know, like under 500, it was around 250. So this shows that the market has lots of potential. It has been steadily growing. In 2021, what was, you know, 250 in 2007 went up to almost 1200 in 2021. And it's expected to grow. So the market has a lot of potential, yes. Okay, that's very interesting. Nisma, and other than that, generally in the course of your investigation, आपको कोई चीज़ें नज़र आई हों, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त, कोई चैलेंजेस वो फेस कर रहे हों, कंपटीशन कितना हीट अप हुआ है इस वक्त क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स अब मार्केट में आ गए हैं, व्हाट इज़ द लैंडस्केप किस तरह का दिख रहा है आपको? अच्छा, तो first of all, most of these brands are sourcing from abroad. Pakistan में locally produced नहीं होते ये, even though we get the impression that these are local because, you know, the face of the brand and the, you know, just the product seems local because local retailers इसको बेच रहे हैं. But they're actually like outsourced and private labeled.
just like a lot of other things in other industries as well. तो ये है कि competition comes in obviously because there's more and more people entering the market, and then everyone plays on a price point. If you notice, they always have sales going on, and like they're using promotional pricing to kind of gain the market share that they're hoping to gain. Also, it also depends. Just say brands who have been in the market for longer obviously have a competitive edge. They have more experience. They have a more loyal, established consumer base. जो नए वाले हैं वो आपस में compete कर रहे हैं, लेकिन J Dot and Bonanza, Satrangi don't really consider the new ones as competition that's going to be threatening, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही वो अलग तरीके से करते हैं. एंड लाइक द न्यू वंस हैव मे बी लाइक 5 to 50 भी मैं बहुत एम्बिशियस नंबर बता रही हूँ, in their range, like different fragrances. But with J Dot and Bonanza, they have over 100 different fragrances. All right. Nisma, that makes a lot of sense. Thank you very much. अगर आप लोगों ने और डिटेल्स इसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ निस्मा की फुल स्टोरी प्रॉफिट की वेबसाइट पर जाके पढ़िए. निस्मा, बहुत शुक्रिया.